हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू डूइंग ग्रेट। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर साइंस या फिर रिलेटेड फील्ड्स और उनको एक फुल टाइम लॉन्ग टर्म इंटर्नशिप करनी है आउटसाइड इंडिया इन जर्मनी इन वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इन जर्मनी कॉल्ड मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट। और उनका एक इंटरेस्टिंग प्रोग्राम आया है विच टारगेट स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस एटसेट्रा। इस फील्ड्स में है कई सारे रिसर्च लेवल के स्टूडेंट्स को टारगेट करता है, चाहे आप मास्टर के स्टूडेंट हो, पीएचडी के स्टूडेंट हो, थीसिस के स्टूडेंट हो, उनको भी टारगेट करता है। और ये 12 से 14 महीने का कमिटमेंट आपसे एक्सपेक्ट करते हैं फॉर दिस प्रोग्राम। सो दिस इज गोइंग टू बी क्वाइट एन एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी, स्पेशली फॉर पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड एंड ऑल्सो हु वांट टू एंटर दिस फील्ड इन दी एंट्री लेवल। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं एंड आई विल टॉक अबाउट द डिटेल्स कि क्या प्रोग्राम है, हाउ टू अप्लाई, what documents are required, whether you should apply or not, how much funding you get, what kind of resources are available to you, why this program can be beneficial for you। इन चीज़ों को भी थोड़ा मैं डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। सो विदाउट फर्दर अडू, ज़्यादा डिले किए बिना इस वीडियो को शुरू करते हैं। एंड प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना एंड ट्राई शेयरिंग दिस विद योर फ्रेंड्स हु माइट बी इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड जस्ट इन केस दे शुड अप्लाई टू दिस प्रोग्राम ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो राइट अवे। सो एज यूजुअल आ जाते हैं मेरी स्क्रीन पर, आप देख पा रहे होंगे नाम है मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट CS इंटर्नशिप। दिस टारगेट्स students who are interested in software systems, security and privacy, informatics, and this is of course fully funded and Max Planck Institute has, so their infrastructure is world class research, and the good thing is it is open to students worldwide। तो आपको एक ग्लोबल सेटिंग में काम करने का मौका मिलेगा, प्लस इट इज ओपन टू इंडियन स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स। एंड दिस इज फुली फंडेड, इट इज इन जर्मनी बिकॉज मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट इन जर्मनी की बात कर रहे हैं। और भी इंस्टीट्यूट्स हैं यूएस वगैरह में, बट वी विल टॉक अबाउट द प्रोग्राम इन जर्मनी बिकॉज उसका ही नोटिफिकेशन बाहर आया था। एंड द ड्यूरेशन इज 12 to 14 वीक्स। थोड़ा सा मैक्स प्लैंक सोसाइटी का मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इन केस यू डोंट नो व्हाट दे आर। So they are Germany's most successful, yeah, one of the largest, the scientific societies in Germany. They're dedicated to basic research at the highest international level. बहुत international collaboration होता है, काफ़ी सारे scientific collaborators हैं all over the globe in all the Max Planck institutes throughout. They have total 86 research institutions worldwide. This was founded in 1948 in Göttingen, Germany, and they have over 24,000 scientific staff and support staff, and they have 30 plus Nobel laureates associated with their societies or different research institutes. अब अगर हम बात करें इस CIS की, which is Computer Science in the Max Planck Society, so this is the umbrella of Max Planck's Computer Science Institutes. It coordinates with internship programs across 3 specialist institutes covering the full spectrum of modern computer science, from algorithms to AI, security systems and robotics। तो ये 3 मेजर डोमेन्स को टारगेट करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये इंटर्नशिप है, विच आई थिंक इज़ प्रिटी गुड। तो अगर बात करें कि कौन से जगह पर आपके जो एप्लीकेशन है वो जाने वाले हैं, इफ़ यू अप्लाई टू दिस, वुड बी NPI for informatics in Saarbrücken, then we have MPI for software systems which is in Saarbrücken, plus ये नाम थोड़ा सा विचित्र है तो मैं इसको ध्यान से पढ़ूंगा, which is Kaisers Lautern। अब अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन इधर उधर गया है, so please do not mind, my German is not perfect। And then we have MPI for security and privacy which is in Bochum। तो ये 3 इंस्टीट्यूट्स हैं which are in these particular locations जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो। अब इस इंटर्नशिप प्रोग्राम की थोड़ी सी बात करें, सो दिस इज एज फॉलोज। दिस इज अ फुल्ली फंडेड प्रोग्राम ऑफ कोर्स विच प्रोवाइड्स यू स्टाइपेंड, हाउसिंग एंड राउंड ट्रिप travel costs, which is a good thing। So this is a very good thing for you if you're applying। And this is a 12 to 14 week program। तो 12 से 14 हफ्ते है। अगर मैंने कहीं गलती से महीने बोल दिया था, आई एम वेरी वेरी सॉरी। हफ्ते और महीनों में कंफ्यूजन नहीं करना चाहिए। सो दिस इज 12 to 14 वीक्स एंड दिस इज टिपिकली फॉर समर ड्यूरेशन। तो अगर आपकी जो थीसिस है उसका आप हिस्सा रखना चाहते हो to this program or internship, then you should do this before your thesis begins, so that at least once you are in the program, आप continue जब करो, so you're able to work remotely, or you are able to at least get the information which is needed to write in your thesis in the long run, ताकि आप distance में भी काम करो, online भी काम करो remotely, you are able to get the content which is relevant to your thesis or whatever you're writing। Okay, then this is a year around program। ऐसा नहीं है कि सिर्फ
एक बार ही आप अप्लाई कर सकते हो। ऑल्दो देयर आर सम इन्फॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट कि नवंबर 1 से पहले आपको ट्राई करना चाहिए इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर द समर थिंग, बट आई विल टेल यू अबाउट दैट इन अ डिटेल। अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन एप्लीकेशंस आते हैं, दे आर अराउंड समर ओनली। Of course, you need to speak English. German is not required. There is direct mentoring, which is one-on-one, which is more or less the case with many of these programs. And if you are successful and you have a good internship, you do good work, you are also able to publish, which is also a very good thing. So, publications matter. अगर आप especially first फॉरेन इंटर्नशिप कर रहे हो, एक लार्ज कोलैबोरेशन के साथ आप पहली बार काम कर रहे हो, इट्स अ वेरी आई वुड से प्रोग्रेसिव थिंग फॉर योर सीवी। ओके, मूविंग ऑन। इन 3 इंस्टीट्यूट्स के बारे में मैं थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ ताकि आप जब अप्लाई करने जाओ आपको पता रहे व्हाट यू आर गेटिंग इनटू। ओके, सो एमपीआई इन फॉर इंफॉर्मेटिक्स इज़ इन सारब्रुक इन जर्मनी। वेबसाइट ये रही। दे हैव डिपार्टमेंट्स व्हिच स्टडी एल्गोरिथम, theoretical computer science, computer graphics, computer vision, bioinformatics, databases, natural language processing, machine learning, and programming languages. This is very interesting, or I would say the right fit for students who are interested in algorithms, machine learning, data structures, theoretical computer science, computer vision, or bioinformatics. तो काफ़ी सारे broad field के students apply कर सकते हैं from all over the different kinds of bachelor's or master's background. अगर मैक्स लैंग इंस्टीट्यूट फॉर सॉफ्टवेयर सिस्टम्स की बात करें विच इज़ इन दिस लोकेशन, ये काम कर दे हैव डिपार्टमेंट्स विच वर्क ऑन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, प्रोग्राम वेरिफिकेशन, distributed systems, networking, operating systems, computer human interaction, social computing, and formal methods. And agar best fit की बात करें which students are primarily targeted, so this is for students who are interested in systems programming, formal methods, distributed computing, or human computer interaction. Now I don't know everything about these students because I am not a computer science student. I have never done remotely close to computer science. तो जिसको ज़्यादा आइडिया है दे विल अंडरस्टैंड एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद देम, मे बी दे हैव सम क्रिटिकल comments to add here because I am not an expert. I found this program, I found it interesting, and I'm telling you about this. Next, we have NPI for Security and Privacy, which is in Bochum, Germany, and ये काम करते हैं cryptography, security systems पे, system security, network security, privacy enhancing technologies, hardware security, machine learning and security, and applied security. And this is ideal for students who are interested in cryptography, cybersecurity, network security, or privacy. तो इन सारे स्टूडेंट्स को टारगेट करता हुआ ये बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, 3 इंस्टीट्यूट्स इन टोटल। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ दीज और इफ यू नो समबडी हु इज इंटरेस्टेड, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद देम। तो रिसर्च एरियाज़ की मैंने पहले ही बता दिया है आपको क्या चीज़ें हैं, सो आई विल जस्ट स्किप दिस स्लाइड वेरी काइंडली। Okay, and who can apply? This is important. So bachelor students can apply, must have completed coursework equivalent to the first 3 years of CS undergraduate programs by the starting of the internship. तो अगर आप थर्ड ईयर खत्म करने वाले हो आप अप्लाई कर सकते हो because you should have finished by the time you start this internship. Master student can apply worldwide with very strong academic record required irrespective of degree length. Keep in mind, MPIs are competitive and a lot of people will apply, so your academic record does matter a lot. PhD और डॉक्टरल स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स भी अप्लाई कर सकते हैं, थीसिस स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ये स्पेसिफिक में इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू डू थीसिस इन दिस फील्ड, यू कैन अप्लाई एंड देन आप 2-3 महीने की इंटर्नशिप करने के बाद वापस आके कंटिन्यू कर सकते हो या फिर रिमोटली कर सकते हो या वहाँ पर रह सकते हो इन केस दे हैव एक्सटेंडेड फंडिंग फॉर यू फ्रॉम द ग्रुप विच इज पॉसिबल इन मेनी केसेस एंड देयरफॉर यू कैन अप्लाई इफ यू प्लान टू डू थीसिस इन दिस फील्ड। अगेन आई विल टेल यू, अगर मैंने कहीं पर 12 से 14 महीने बोल दिया था, that misspoken. Okay, please just forgive me. Okay, and then we have interdisciplinary applicants who are in CS plus social science, economics, law, welcome, all these things. Who should not apply? जो CS बैकग्राउंड में आ रहे हैं अलग ही किसी बैकग्राउंड से, प्लीज़ डोंट अप्लाई। दे नीड अ गुड स्ट्रॉन्ग एकेडमिक रिकॉर्ड, ट्रांसक्रिप्ट्स आपकी देखी जाएंगी, आपका एक्सपीरियंस भी देखा जाएगा। सो इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम दिस फील्ड, you might not be the best fit. Industry professionals looking to advance in industry career, also not. Students seeking non-academic corporate internship experience, also not. This is purely for research purposes, purely for people who want to work in this field for the purpose of, I would say, not non-academic work experience. ठीक है। Key requirements की बात करें तो strong CS background, excellent academic record, English आनी चाहिए, आपका interest होना चाहिए इसमें genuine, and you should be open to working with students worldwide, which I think you should be.
ओके, डेडलाइंस की बात कर लेते हैं थोड़ा ब्रीफली, विच इज़ काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट फॉर लॉट ऑफ यू। समर इंटर्नशिप जो है, जो मई से अगस्त के बीच में होती है, सो यू हैव मई, जून, जुलाई एंड अगस्त, विच इज़ अराउंड 4 मंथ्स। सो 3 से 4 महीने हो सकती है। इसकी डेडलाइन होती है November 1, तो आपको इससे पहले ही अप्लाई कर देना चाहिए, 3 से 4, इनफैक्ट 5 महीने पहले, सो दैट यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर द preparation of the application. जो notification आता है every year is around February, and notification of the result, I should say. If you get that around 1 February, you are selected. If you don't get any notification, then you are not selected. तो आप इस साल अप्लाई कर रहे हो, अगले साल फरवरी तक रिजल्ट आएगा, फिर उस साल आप इंटर्नशिप कर रहे होगे। टिपिकल ड्यूरेशन इज 12 to 14 वीक्स। सिलेक्शन प्रोसीजर इज काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एंड दैट्स द आइडिया। नॉन समर स्टूडेंट्स जो हैं विच डोंट केयर कब समर आ रहा है कब नहीं आ रहा, इफ़ यू आर ए PhD स्टूडेंट और मे बी यू आर फिनिशिंग योर डिग्री ऑफ मास्टर्स, यू आर इंटरेस्टेड इन दिस, देन यू हैव नो डेडलाइन, आप कभी भी अप्लाई करो, बट एटलीस्ट 5 months बिफोर यू प्लान टू स्टार्ट, उस टाइम तक तो कर ही दो। And response time is typically 4 months. So this is a long period of waiting, which I kind of understand. They might have a lot of applications to process, and they are working with 3 different MPIs. So you have to understand that availability is very, very limited, and the admission process is rolling, which is throughout the year. Okay? How to apply? This is kind of important and might be confusing to some of you who don't really have experience applying to foreign internships. Although मैंने बहुत सारे videos पास में बनाए हैं, but if you still have confusion, I will talk about this. So we have to first submit your online application. You have to upload your CV, transcript, unofficial is okay, but in English. And then you have to, give a contact of one person who will recommend you. So one referee, and then one motivational letter would be good. It is optional, but would be good and very, very helpful. And then also, आपका पीरियड जिसमें आप इंटरेस्टेड हो काम करने के लिए, मे बी इफ़ यू हैव डन सम रिसर्च अबाउट समबडी, देयर नेम ऑल्सो, कि मेरे को इनके साथ इस ग्रुप में काम करना है, विच आई विल पर्सनली टेल यू यू शुड डू, एक्चुअली इट्स वेरी हेल्पफुल, एंड यू शुड ऑल्सो ईमेल देम इफ यू वांट, एंड देन गेट ऑन अ कॉन्वर्सेशन सो दैट दे हैव यू इन माइंड, विच कैन बी अ बिट tedious, but it is very helpful. Then there is a matchmaking process. So मैच मेकिंग प्रोसेस होने के बाद आपको एक सुपरवाइजर, एक नहीं, आपको एक्चुअली faculty and research groups at the 3 institutes will review your application. Then they will indicate multiple areas of research using the common field. Then of course you don't have to submit multiple applications, just one application indicating your interest, and then you will receive a notification for some interview or some presentation which you have to submit. आपका वो हो जाएगा, उसके बाद आपको एक ईमेल आएगा, चिट्ठी आएगी, एंड दे ओनली सेंड आउट दीज चिट्ठियाँ टू पीपल हु हैव बीन सेलेक्टेड. Those who have not been selected will not get any notification. And then once you are done with all this process, you are selected, then आपको एक assign किया जाएगा mentor, जो आपकी dates finalize करेगा, duration, research project, and then based on your interest, you will start your project whenever you want. ठीक है, फंडी की बात कर लेते हैं, और वीज़ा में क्या आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है उसकी भी ज़रा बात कर लेते हैं. सो योर मंथली स्टाइपेंड इज़ फुल्ली कवर्ड, विच इज़ वेरी वेरी गुड. जितना मैंने वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन पाई, दे कवर ऑल ऑफ दिस. ऑल्सो दे गिव यू हाउसिंग सपोर्ट, विच इज़ ऑल्सो कवर्ड. कॉस्ट ऑफ अकोमोडेशन ड्यूरिंग द इंटर्नशिप इज़ फुल्ली पेड बाय द इंस्टीट्यूट, एंड इज़ ऑल्सो जो मंथली स्टाइपेंड है इज़ ऑल्सो इनफ टू हेल्प यू सस्टेन योर लाइफ. खाना पीना रहना घूमना विल बी कवर्ड, and also your flight trip would be covered, which is round trip. So coming to Germany, going back from Germany would be covered, also very good. Visa support bhi hai. So if you need a German Schengen visa, German or Schengen visa, which Indian passport holders do need, they will provide all necessary supporting documents, which of course they have to, which includes invitation letters, financial proof, housing confirmation, and then you apply to your visa consulate or VFS, jo bhi hai, and then of course, they cannot control the outcome. Best idea is that you submit all the documents correctly, you provide all the information correctly, फिर आपका visa approve हो जाता है, and then your visa fee would probably be waived, given that you are getting scholarship, which you are. So most probably your visa fee would be waived, and you don't have to consider paying the entire fee. Initially you will have to, but then the VFS or the embassy will refund you the money, which also is very good. कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें, सो मोर और लेस आपका टोटल लिविंग कॉस्ट 600 से 900 के बीच माना चाहिए, खाना रहना मिला के, बट दे कवर अ लॉट ऑफ दीज कॉस्ट, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस ऑफ कोर्स यू कैन डिस्कस in detail when you are in the interview process or by email, whatever suits you the best. ठीक है, टिप्स की मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, ये मैंने सिर्फ लिख दिया है फॉर दिस रीज़न. आई विल राइट इट हियर.
Okay, if you want, you can sit and read this. Of course, I would recommend going through this क्योंकि इज्जत से प्यार मोहब्बत से मैंने ये टिप्स आपके लिए लिखी हैं, बट नॉट बिकॉज आई वांट टू टेल यू देम अगेन एंड अगेन. मैं हर वीडियो में सेम चीज़ रिपीट करता हूँ. सो प्लीज इफ यू वांट यू कैन रीड दिस. इट्स द सेम थिंग, राइट? व्हेनेवर you're applying to programs like these, you have to kind of do this process where something is repetitive. Your application process is pretty much the same for a lot of these programs. ऑल्सो नॉट जस्ट द एप्लीकेशन प्रोसेस, बट आपका इंटरव्यू प्रोसेस जो होता है वो सेम रहता है. फंडिंग ऑप्शंस भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत फंडिंग अलग होती है. सो यू गेट द आइडिया. प्लीज़ अप्लाई इफ़ यू आर ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट और यू नो समबडी हु इज़ इंटरेस्टेड इन दीज एरियाज जिनकी मैंने बात की. उनको ये वीडियो भेज दो सो दैट दे कैन अप्लाई टू these programs which are interesting for them. ठीक है, so I will summarize this video by saying apply, apply, apply if you are interested. And yes, with that I conclude this video. All the very best if you're applying. I would highly recommend, if you're interested, please take the chance. You might get selected and you might come to this country, enjoy the nice atmosphere और weather भी उस time पे अच्छा होता है. Summer में kind of अच्छा रहता है. Okay, so with this we come to an end of this video. Thank you very much for watching. If you have any questions whatsoever, comment sections are always open. Ask your questions and we would be more than happy to answer. I'm Sagar here, signing off. All the very best. Have a nice day. Bye.